Thank you, Haider, and thank you for having me on Haidershowbiz. For me, I love the energy, यार. आपने बहुत deep research की थी. Very rarely do I say this. Comments से लेके content तक and social media से सब कुछ बहुत ही interesting लगा. Thank you so much. Keep watching Haidershowbiz and subscribe to Mashable India. Siddharth, how are you? Very well, yaar. How are you? Great. So, how's the thing going? Just a normal weekend, yaar. Household chores. And how's the show going? I think we've had a beautiful journey so far, and I think it's just beginning to get where we are thinking it could be. Acha. All right. So, Siddharth, I'm just seeing your show, The Bombay Journey. It's a fabulous show. So, how you came to this idea, like driving in the car and talking to the guests? I think when I was reading one comment, so someone wrote that the idea inspired by Hindustani Bhav. No, absolutely not. I think there are मेरा स्टैंडर्ड जवाब जो है, जो हमारा मैशेबल का स्टांस भी रहता है, वो ये है कि आइडिया तो देखो बहुत सिंपल था. We've developed shows like this for Network 18 and while we were at Times, where as a team we created the First Post show while I had co-founded the First Post studio, which is one of Network 18 properties. And at Times Internet, we strategized and given recommendations about, going face first with communication, even if you're a big publisher. So when we came to Folk Media Group, it was very simple. As Mashable India, which is known for being obsessed with tech, auto, pop culture, and entertainment, we said, why don't we go indulging with the stars and our celebrities or our famous influencers in a manner that is very comfortable for them, कि वो लोग चलते चलते ही अपनी कहानियां सुना दें, जो एरिया देखें उसकी कहानी सुना दें. एंड ऑफ कोर्स मैं फूडी हूं, हमारी टीम बहुत बड़ी फूडी है और बहुत ट्रैवल पसंद करती है, तो हाउ कैन वी देन गेट ऑल ऑफ दीज आंसर्स इन वन गो. प्लस हमें एक ऐसा शो बनाना था यार जो सेलिब्रिटीज को अच्छा लगे. दे आर टायर्ड ऑफ जस्ट सिटिंग अराउंड ड्यूरिंग प्रमोशंस और ड्यूरिंग इंटरव्यूज in a talk show format, and because we also required some kind of good concept now, because this is also good, like when you are driving the car and suddenly as a moment aa jata where you can discuss. So this is a full candid conversation. You doesn't know about this particular, acha, okay, this was also part of your life, that was like that. Yes. For example, I saw Ajay Devgan was sharing his one library, क्या पता नहीं है कि नहीं है वहाँ पे. So this was something unique. And moreover, जब in 2020 जब हम COVID में थे, so we used to take all the interviews with the help of Zooms and all that. So वो एकदम boring concept हो जाता है कि जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, एकदम laptop के सामने बैठे हुए हैं and we are having conversation. And apart from this type of conversation, when we are doing this kind of outdoor conversation in the car or somewhere in the beaches, having pani puri, conversation during having pani puri, so वो सब है ना पब्लिक देखती है, ओके वो वाओ, ये कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी पानी पूरी के साथ खा रहा है. So this kind of concept is very good. So essentially हिंदुस्तानी भाव शायद गाड़ी में बैठ के किया करते थे, लेकिन मतलब ऐसा है कि कोई भी गाड़ी में, आप भी गाड़ी में बैठ के कर सकते हो. 7 जैसे जॉनर हैं सिनेमा के, वैसे ही there are only so many formats in which an interview can be done. So truly no inspiration. However, I would travel back with my wife from office, and at that time my girlfriend, I would drop her. तो वहां पर हम लोग गाड़ी चलते चलते, मैं बंबई के बारे में काफी कुछ जानता था, तो मैं उसको बताता था. और हम लोग कई बार गाने भी गा लेते थे, क्योंकि अगर कुछ corporate office है, somebody is strict with you, somebody's asked you to do something according to protocol, और अगर हम नहीं करते थे, हम innovate करते थे, तो डांट भी पड़ जाती थी. तो रास्ते में आते हुए ऐसे बिना लिरिक्स जाने कोई गाना गाने में भी एक आनंद है. अगर आप ट्राई करोगे तो एक there is some fun in it. तो हम लोग वो करा करते हैं. That's exactly how the Bombay Journey was born. So you are completely from Mumbai? No. I am not from Bombay, and मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियंसेस को ये बताऊं कि आप जितना ये आंसर परफेक्ट कर सकते हो. Where are you from? So my father is from Haryana. Okay. So technically I hail from Panipat. My mother is from Gwalior, which is in the heart of India. Oh wow. I was born and brought up in Hyderabad. Okay. But we've been in Bombay, and I've been in Bombay for about 13 years now. Okay, so you speak Tamil or Telugu, or? I can read and write Telugu, yes. Oh wow. I recently saw a movie, RRR.
And Of course. yeah, and yesterday only I saw it on Netflix. It was very good movie. So I mean, Tamil and Telugu, that industry, like film industry, is doing extremely well as compared to the Bollywood. And Bollywood is also doing good. मैं जब RRR देख रहा था ना, so suddenly I saw Ajay Devgan. I was like, oh, Ajay Devgan आ गया. Okay, fine. Then I saw Alia Bhatt also. So they are trying to build a mutual collab with the Bollywood as well. So what do you want to say on this? यार आई थिंक द क्वेश्चन फॉर मी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देखो कैसा है कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम इंडस्ट्रीज, ये ना चारों काफी बड़ी कंट्रीब्यूटर्स रही हैं. अगर आप अभी जाके बॉलीवुड वर्सेस ऑल ऑफ दीस अदर इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन होने लग गया है, बट अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो हम हमेशा अडेप्ट करे आए हैं. तो हिंदी सिनेमा ने, जैसे कई सारी सलमान भाई की फिल्म्स भी वर ऑल अडेप्टेशंस और प्योर प्ले, यू नो, टेकन फ्रॉम तेलुगु सिनेमा, ऑफ कोर्स with rights and or from Tamil cinema. अब जाके कंपैरिजन होने लग गया बिकॉज बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत बढ़ गए. तो आरआरआर या केजीएफ या चैप्टर 2 एंड ऑल दैट, यस, बाहुबली, इन सब ने ना बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिया, तो हिला दिया थोड़ा बॉलीवुड के मैथमेटिक्स को. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है. और फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, सिनेमा गोअर्स को कोविड के बाद अपने घर से निकल के, अपनी कंफर्ट में टीवी से निकल के या फोन में से निकल के थिएटर में कुछ देखने के लिए स्पेक्टिकल चाहिए मेरे हिसाब से. तो वो स्पेक्टिकल को सर्विस कर रहा है वो इंडस्ट्री, और ब्यूटीफुली कर रहा है. तो आई थिंक बॉलीवुड इज प्लेइंग कैच अप विद द अदर इंडस्ट्रीज, एंड नाउ दे आर लिटिल स्कैर्ड आल्सो कि हम क्या बनाएं. Right. And if you get a chance to make a movie, so you are a film lover, right? यार मैं चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करता था, तो मैंने 3 फिल्में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. कौन सी वाली? 6 सीरियल किए थे. सो हरीबरी की थी, जो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी in 98. There was a Suresh Babu Productions directed by a Tamil director called Neeku Nenu Nakunugu, which had Uday Kiran and Shreya Saran in it. Full-fledged Telugu family dramedy. And then there was another film in which went around to the festivals called Brinda, directed by Ajit Nag. इसके बाद मैंने 6 सीरियल किए थे, जो बाहुबली के प्रोड्यूसर्स है ना, अर्का मीडिया, उनका पहला सीरियल था वो. तो उसका नाम था शांति निवासम. इट वाज बेसिकली अ तेलुगु सीरियल जिसको उन लोगों ने हिंदी में बनाया था, जिसका नाम हिंदी में हो जाता है सच होंगे सपने. तो वो है अभी भी? यार कुछ क्लिप्स जरूर मिल जाएंगी ऑनलाइन, हरी भरी या सच होंगे सपने दोनों की. अच्छा, बट कौन से साल में बना था ये था यार, मैंने 260 एपिसोड्स किए थे, तो करीब आप सोचो 2002 से 6 तक चला होगा शूट इसका. तो 2-3-4 साल तो किया ही था ये. So why don't you like carry it forward towards the film industry? यार मैं तो आई हैव बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट. फिर मैं 2-3 साल पढ़ाई किया, क्योंकि हैदराबाद में अगर आप नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जानते हैं तो थोड़ा पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है. इनफैक्ट आईआईटी कोचिंग वगैरह भी की मैंने, एंड आई गेव ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में भी आ गया था मेरा नाम. बट आई मूव टू बॉम्बे एंड आई बिकेम अ फोटोग्राफर बिकॉज़ वो मेरा पैशन है. जस्ट लाइक इन्वर्टेंडो फील्ड को बहुत प्यार करता हूं. A person coming all the way from IIT or something similar field and going all the way to photography or invertendo field, वो थोड़ा awkward लगता है. Okay, wow, ये इतना घूम के क्यों गाड़ी लेके आया है ये? So ऐसा क्यों? यार आई थिंक मुझे नहीं पता था, लाइक एनी अदर टीनेजर हु कैन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, हमें शायद नहीं पता होता हमें क्या करना है. तो तब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि इफ यू सी द बॉडी टाइप, the cute, chubby, funny guy was always the comedy or the comical character or the comical relief, kind of, or the villainous right hand who gets beat up a lot during the end. You know, still a comical element via the villain. There wasn't a character artist like Nawaz bhai, Baman saab, Paresh bhai. ये सब तब हीरो नहीं बने थे. They were not carrying films by themselves. Anupam Kher या नसीरुद्दीन शाह. तो 2008 या 10 में जब मैं बॉम्बे आया, 8 में बॉम्बे के लिए थॉट आई सबसे पहले, और 10 में एक्चुअली आया, तब तक these were not character artists, didn't drive films to the theaters. I mean, मतलब you know, they were character artists. तो तब मेरे लिए वही रोल्स अवेलेबल थे. या तो मैं थोड़ा कम मोटा था for a गणेश का रोल, or I wasn't you know, lean enough for a hero or whatever. So if you get chance right now, then for example, let's suppose that if you get a chance, so which kind of movie you would be choosing? Because आज के time पे each and every actor used to read the script, and according to the particular script they used to sign the contract. Alright, so if you would be getting this kind of any concept based movie, so which kind of movie you would be choosing for yourself? यार anything, I don't mind working on anything, you know. मतलब ऐसा है कि acting तो अभी भी मतलब it's
I think people would tell me on sets, and these are my directors or ABs who would tell me कि natural actor है भाई ये, इसको टेंशन नहीं है, इसको दे दो काम आ जाता है. तो टचवुड फॉर दैट. एंड अगर कोई लाएगा यार तो व्हाई नॉट. मतलब एक्टिंग से फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी से डायरेक्शन, प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन हैड मोर मनी. कई सारी शॉर्ट फिल्म बनाई 5 साल के लिए. तो मेरा जर्नी मेरा एक थोड़ा सा वियर्डली यूनिक हो जाता है. इट्स नॉट लाइक समबडी कैन रेप्लिकेट इट, जैसे कि पढ़ाई की इसकी और फिर एडी किया और डायरेक्टर बन गए. मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया और समझ के लिया. कॉर्पोरेट किया करीब, अब तो 7 साल हो गए कॉर्पोरेट करते करते, जहां पर स्टूडियोज बनाए हैं, ब्रांडेड कंटेंट किया है, एडवर्टाइजिंग किया. तो एज ऑफ राइट नाउ मैं एड्स भी डायरेक्ट करता हूँ, ब्रांडेड कंटेंट भी बनाता हूँ, और काफी बड़ा चंक हो एज अ होस्ट, बॉम्बे जर्नी होस्ट करने के अलावा कर्ली टेल्स के साथ भी हम लोग ने एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां की. Right. I saw that collaboration with that. So Yes. Apart from all this, what kind of hobby do you have? Because I can see your background, because your home, you have done your interior designing and all that. So what Yes. was all about interior designing? यार ये पेंटिंग्स हमारी मित्र हैं, मेरी वाइफ की मित्र हैं, तन्वी बंसल, उन्होंने बनाई है. शी इज अ डिजाइनर विद मैंगो एक्चुअली, बट शी डज दीज अमेजिंग पेंटिंग्स. Plants we love. So this is a nerve plant. This guy we call tree because he's become tall enough to be as So tall every as us. painting says a story. Like for example, when we Yes. used to say, I have completed BMM, Bachelor of Mass Media, and Specialist in Advertisement. So हमें वहाँ पे ना एक subject था photography करके. So वहाँ पे ना we used to read कि each and every photo says anything or something. So I just want to know, according to you, what that image says to you. This one. Yeah. This one is fluidity, yaar. I think it's fluid, but it has its theravs. Those white dots are for me, therav and some sort of this Which thing. gives But you there's a positive vibes. could be, yaar, whatever. How you perceive a painting can be very different from anybody who's watching this. Could be or how I perceive it. But we're really happy to support our friends and our artists, those log, and we've paid for it because we didn't want it for free. And the plants or interior designing is done by this nice place called Design Cafe. तो आप अगर मुंबई के रियल एस्टेट को जानते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पॉपुलरली माचिस की डब्बी के घर होते हैं, जैसे बोला जाता है. Right. A whole lot of money. और उसमें से भी अगर कोई कहते हैं कि आपके ही घर में से इंटीरियर डिजाइन करके we would be giving you more 35% of your space, so people will be like कि कैसे पॉसिबल है, how is it possible? यार मेरे ब्लूप्रिंट में तो 35% आता ही नहीं है, and what you will be doing this kind of magic to get more 35%. So this is all possible due to this interior designing and all that. That's true. तो उसी वजह से डिजाइन कैफे की वजह से we are able to put up whatever art and crafts and everything else that we want around the house, because थोड़ा perception तो ज्यादा है स्पेस का. However they've done it. तो I think आप सबसे ज्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड करते हो यार, तो it was very important and pertinent for us कि हम as close to who we are बनाएं. तो इस वजह से ये बना. But passion वाला आंसर, to be honest, मैं जब भी थोड़ा सा डाउन फील करता हूं तो मैं आई पिक अप माय कैमरा एंड आई स्टार्ट शूटिंग, एंड द कैमरा राइट नाउ इज माय फोन. तो मतलब मैं फोन पे ही फोटोग्राफी करता हूं. और आई कीप ट्राइंग डिफरेंट डिवाइसेस आल्सो. लाइक रिसेंटली वी वर ट्राइंग द Samsung S22 Samsung Galaxy S22 Ultra. और उसकी नाइटोग्राफी फीचर बाप है. मतलब रात को मैंने विद अ फ्रेंड फोटोग्राफी किया और मजा आ गया. तो फोटोग्राफी गिव्स मी प्लेजर. आई लव टू कुक, सो दैट गिव्स मी प्लेजर. आई थिंक these two would be my absolute favorite but hobbies. People will be commenting down that Samsung 22 Ultra से लाख गुना अच्छा सा iPhone 13 Pro का कैमरा होगा, where you can get a night selfie with flawless conditions and all that. So how about iPhone clarity? यार the good part about working with Mashable India is that क्योंकि हम इतना टेक ऑब्सेस्ड भी है ना, हमें एक बेसिक समझ आ जाती है कि देखो आपको जो आईफोन देगा उसकी एक कलर और डेप्थ और फोकल पॉइंट्स की बात होगी. बट जो सैमसंग गैलेक्सी ने किया है ना, they've perfected great bloody set of zoom. There's a great sort of picture quality, and ज्यादा ना वो मेड अप सा नहीं लगता. मतलब काफी रियल लगता है. इन डेप्थ फीलिंग अच्छी आती है. 50K जूम कर दो और वहां का क्या हो रहा है पूरा टेलीस्कोप टाइप वो पूरा फील कर लो. Exactly. But there's a good review on Mashable. Go watch it. उसमें मैंने बहुत ढंग से विवरण दिया टेक्निकलिटीज के साथ. मतलब अभी बहुत टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं यहाँ तो मैशेबल इंडिया जो ग्रुप ऑफ जो कंटेंट है इसमें क्या क्या प्रोड्यूस करता है. लाइक जस्ट लाइक मोबाइल रिव्यू प्रोडक्ट्स भी रिव्यू करता है, फिल्म रिव्यू टाइप भी करता है, देन इंटरव्यू पॉडकास्ट भी करता है. तो क्या क्या करता है मैशेबल इंडिया?
यार Mashable is a legacy international platform owned by Ziv Davis, ठीक है? Right. हम उसको syndicate करके इंडिया में चलाते हैं as folk media group. तो Mashable ना basically टेक रिव्यूज करता है बट इन अ वेरी लाइफस्टाइल मैनर. मतलब क्योंकि हम इतने टेक रिव्यूज देखते हैं, इट कैन गेट बोरिंग टू द ऑडियंसेस. हम बोलते हैं कि अगर फोटोग्राफर एक फोटो फर्स्ट फोन को अगर बाहर लेके जाता है और फोटोग्राफी करता है तो उसका रिव्यू मैं सुनना चाहूंगा. अगर एक इन्फ्लुएंसर वो कैमरा को लेके जाती है और वो बताती कि कैसे वीलॉग कर सकती है वो हर दिन, तो वो मैं सुनना चाहता. वैसे ही अगर एक ट्रैवलर उसको लेके जाता तो मैं ये सुनना चाहता कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी लंबी चलती है. यू नो, रियल डील सिचुएशंस. वैसे ही हम लोग जो गाड़ी के इंटरव्यूज करते हैं, ऐसा होता है कि गाड़ियां हमारे पास रिव्यू के लिए आती हैं. You know, so all these manufacturers are actually sending us cars. I just saw that this one curly tails. I saw that car of Skoda. So that was the one example I can give you. Correct. So Skoda Slavia now came to us and they said, you know, we made a great sedan. It has great legroom. And to be very honest, I love the DSG gearbox. Even though people have their qualms about it, it is very simply German engineering. For me, German engineering gives me that kick in the Mercedes and all that, right? मतलब it's the same platform that the Audis are built on. तो आप सोचो कि सेम प्लेटफॉर्म पे जिसपे ऑडी बन रही है, आपको Volkswagen मिल रही है या आपको Skoda मिल रही है करीब 15-16 लाख के ब्रैकेट पे, and it's a sexy looking car. So you used to drive each and every car of people, like for example like somehow it is Mercedes or XYZ cars. So what is your favorite cars and why? Because you are the person who's driving the car. यार, to be very honest, I'm slightly future forward thinking. तो मेरे लिए Audi e-tron is probably my most favorite kind of vehicle. But there is also the Land Rover Defender, because for me what matters is the height and the SUV feel. So nothing beats Defender. It's an absolute beast. But I equally also like Ather का electric scooter. पता है आपको? मतलब it's so convenient. City के लिए best है. I own one. So there is a range of vehicles, and then there are those vehicles which don't need the badge, मतलब जो हमारे जैसे आम जनता चलाती है. तो the Skoda Slavia was actually a great one. किया कि Sonet और Seltos बहुत बेहतरीन cars हैं. There is never one favorite यार. मतलब compact SUV की एक निकाल लूंगा मैं, sedan एक निकाल लूंगा, actual SUV एक निकाल लूंगा. And which car you own for this? I have the Kia Sonet. Okay. Which color you have? Which color is your favorite? I like all their colors technically, but we have the gray color. I think it's called space gray. I do believe gray and white are the sophisticated colors. You can use it, like anyone can use it. Gray, white, or even black as well. यार ब्लैक को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि धूल, मतलब मेंटेनेंस के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो हमने सारी चीजें ऐसी बना रखी हैं घर के आसपास कि जो मेंटेनेंस कम लगे जिसमें. तो अगर आप व्हाइट या ग्रे पकड़ते हो तो उसमें ज्यादा दिखता नहीं है गंदगी, बेसिक डस्ट भी नहीं दिखती. तो इसीलिए वो वाली कलर ज्यादा चलती है. बट जनरली इफ यू सी व्हाइट कार्स, इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट हैपन ऑन द रोड, दे आर द लीस्ट नंबर ऑफ कार्स दैट मीट विद एन एक्सीडेंट, प्योरली बिकॉज़ द आई कैन प्रोनाउंस्ड इन अ वेरी प्रोनाउंस्ड मैनर. अगर हम बात करें दिल्ली में जैसे फॉग होता है, या यूएई में सबसे ज्यादा फॉग होता है, तो वहाँ पे गाड़ी दिखती नहीं है बिकॉज उतना ज्यादा वो फॉग होता है. और अगर व्हाइट में ही अगर गाड़ी है तो वो भी शायद कहीं ना कहीं दिखती नहीं. अगर ब्लैक कलर में हो तो कहीं ना कहीं दिख जाती है कि समथिंग कोई व्हीकल आ रही है रास्ते में, ऐसा कुछ दिख सकता है. बिकॉज अगर रेड कलर हो या ग्रीन कोई डार्क कलर हो तो इजीली विजिबल हो जाता है. यार आई एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड दिस, ठीक है? तो क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ टिल 12th एटलीस्ट. एसेंशियली क्या है, ब्लैक अब्सॉर्ब्स लाइट, तो वो बाउंस नहीं कर रहा लाइट को. व्हाइट ना बाउंस कर देगा लाइट को. आई एम श्योर, आई एम नॉट ड्रिवन इन यूएई, बट इफ आई डू देन आई विल नोटिस कि इवन व्हेन यू हैव अ स्मॉगी सिचुएशन और अ फॉगी सिचुएशन और अ डस्ट स्टॉर्म, तब क्या होगा कि व्हाटएवर लिटिल लाइट इज सिपिंग थ्रू, व्हाइट विल बाउंस इट. तो जो बाउंस ऑफ है ना, उसकी वजह से यू विल बी सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम अ कोलिजन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट. So you have an electric bike as well? Yeah, I do have an electric bike. Yes, it is a beauty. The Ather 450. I believe in near future जो जितनी भी जो बाइक्स है वो I think dual screen होने वाली है. First of all, like I do believe like जो first screen होती है which will be your basic information, speedometer or XYZ. Second dual screen should be for for road maps and all that. Because आज भी है ना हम लोग है ना, like for example Swiggy हो गया, Uber हो गया, वो लोग है ना मोबाइल फोन्स लगा के मोबाइल का जो what we used to say जो रियल यूटिलाइजर होता है वहाँ पे मोबाइल लगा के वो लोग मैप देखते हैं कि उनको जाना कहाँ है. अगर ड्यूल स्क्रीन फॉर्मेलिटीज होगी तो वो लोग वहां पे जगह पे वो लोग व्हाट्सएप भी देख सकते हैं, रोड मैपिंग भी देख सकते हैं, इनको जाना का है वो सब भी देख सकते हैं. तो इट कुड बी इन अ न्यू फ्यूचर.
Yeah, not that Aether has paid me for doing this, but Aether में ये feature है. It comes for a subscription of about 2,200 rupees or something. वहीं पे मैप आ जाता है आपके. तो जहाँ स्पीडोमीटर होता है, वहीं पे Aether का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो वहीं पे स्पीडोमीटर के साथ साथ आपका मैप आता है और आपका एफिशिएंसी मोड दिखता है जिसपे आप चला रहे हो बाइक. तो technically it's already here. So being a Mumbaiker, you know all the roads and all that. Yeah, the good part is मेरे चाचा was nice enough, Dr. Satish Sharma. He is an actor now, and he lives in Malad. Okay. So with Malad came the luxury of exploring the suburbs, and I studied in Wilson College, which is in Gamdevi, which is Girgaon Chopati. तो मतलब आप वहाँ जाते हो. That is literally 30 kilometers of traversing every day. Yeah, तो मैं ट्रेन लेके जाता था. तो इस वजह से मुझे टाउन का बहुत मैं वाकिफ हो गया टाउन से, और मैं मलाड और उसके एरियाज के आसपास के काफी मतलब डीपली एंट्रेंच्ड हो गया. तो माकाबो बोलते हैं मलाड, कांदिवली, बोरीवली, और विल्सन कॉलेज की वजह से टाउन. एंड माय देन गर्लफ्रेंड यूज्ड टू स्टे इन पवई, तो मुझे अंधेरी ईस्ट और पवई की काफी ज्यादा जानकारी आ गई. So people also wanna know, when you said a girlfriend, people wanna know that did Siddharth married her girlfriend, or he came up to arrange marriage? Yeah, that's an interesting question. I think if you follow me on Instagram, it's very evident that we had a love marriage, because I don't think I could have done an arranged marriage. And I met my wife, that time girlfriend, at work. It was very clear that I had done enough relationships in life to learn, evolve and know कि मुझे क्या चाहिए था किसी से. तो मैंने at very first instance, और मैं शायद पहली बार बोल रहा हूँ कि I had ended up telling Reema कि देखो भाई, I will not let you friend zone me. Right. And it was a very amicable work relationship that translated into a very easy friendship. So she is my best friend, who I then ended up marrying. And of course, there's a great abundance of love, but I essentially had a love marriage. Lovely, yeah, lovely. It could be a web series for sure, 100% sure. If Siddharth wanna make, or initially wanna start making a movie or kind of a short movie, so यार खुद की बायोपिक पे तो काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी बनेगी. यार थोड़ा ड्रामेटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगियां थोड़ी सादी होती है. मतलब देयर इज एन एवरी डे व्हिच इज वेरी मंडेन. मैं हर दिन सुबह उठ के ऑमलेट एंड चीज ही खाता हूँ. वैसे मतलब उसमें थोड़ा ड्रामा डालना पड़ेगा, बट बन सकती है. एंड इट विल प्रोबब्ली एंड अप बीइंग अ वेब सीरीज, बिकॉज़ मेरी कहानियां थोड़ी लंबी चलती है. Right. So being at home, Siddharth, which when you used to see your own show, basically like Bombay Journey, so which is your favorite show till now, which you if I say right now to watch, which will be the episode which you want to look for yourself? यार टफ आंसर, बिकॉज टफ क्वेश्चन, बिकॉज आपके शो के साथ शायद इतना लगाव हो जाता है कि एक पर्टिकुलर फेवरेट नहीं होता. तो मेरा रीवॉच जो अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं देख के आया हूँ, वो कुणाल खेमू है, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी जेन्युइन रियल डील इंटरव्यू, यू नो. एंड देयर इज ट्रिविया बिहाइंड इट कि पहले 45 मिनट वो खुले ही नहीं बिल्कुल भी. यू नो, he's an introvert. He took his time to open up. And then once we were on the ceiling, something changed and he really opened up. And the last 45 minutes is where we got gold. So Kunal Khemu is my favorite for sure. But I also really like the humility that Bhuvan came with. The real, very raw guy that Divyendu is. And somewhere felt like he's one of our friends. And then with the female celebrities, I think Shruti Hassan has become a friend. Yesterday evening, I sent a matcha chocolate box to her place because I know that she likes matcha. And even I do like so I'm waiting for one as well. मुझे वापस वियतनाम ट्रैवल करना पड़ेगा. मैं वहां से कैरी करके सिंगापुर लेके गया, सिंगापुर से वापस इंडिया और उनको भेजा मैंने. बट रॉयस चॉकलेट्स essentially, again not paid for, extremely good chocolates. And one other person was Dolly, because Dolly and I have worked together in times. So for us, it was like rekindling on a conversation driving around in Mumbai, which we'd only done for work in the past. So basically, you have you have taken interviews of many YouTubers as well. So which kind of YouTuber is your favorite? Because now the era, we are traveling all the way from traditional era all the way to modern era. So now we are stopped at modern era, where it's in YouTuber era basically. So which YouTuber is your favorite? Yeah. I cannot match up with the kind of talent Bhuvan probably has, because एक आदमी 20-25 कैरेक्टर कर पाता है, वो गजब
हमने गजब का मैंने ना उसमें एक कमेंट देखा था, someone told that he do have a split personality disorder. Okay, this was a kind of joke जहाँ पे वो multiple roles play करता है. And even I am a huge fan of भुवन बाम. Alright, so उसकी जो creativity है, जो script alignment है और मेहनत है, उसका कोई जवाब नहीं. मतलब is like heads off. And apart from भुवन बाम, any other name? यार आशीष चंचलानी ऑल्सो समबडी हु आई रिलेट टू एज अ पर्सन, क्योंकि उनकी भी सिनेमा के साथ इन्वॉल्वमेंट उतनी ही शायद रही है जितनी मेरी रही है. मतलब बचपन से आप थिएटर्स में गए, आपके फादर रील काट के चीजें कर रहे हैं. दीज आर सच रियल डील लर्निंग्स, यू नो. नो फिल्म स्कूल कैन गिव यू दैट, कि कैसे ऑडियंसेस को जो पसंद आ रहा है उतना ही रील में रखो और बाकी काट के जल्दी फिल्म खत्म करो, अगली रील चढ़ाओ और वापस फिल्म दिखाओ. Right. यू नो, because So, because we that are is- in that particular age now, जैसे कि 20 to 25 26 होता है ना, इन लोगों को ना कट टू कट रियलिटी चाहिए. like for example if I say कि we belong from same age segment, if I would say, तो वहाँ पे ना हम लोगों को ना वो सब नहीं देखना होता है कि यार सैड सीन इतने लंबे लंबे खींच रहे हैं, फिर क्लाइमैक्स आते आते हम उसको वेट कर रहे हैं, हमारे पॉपकॉर्न खत्म हो गए. वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ ऐसे रियलिस्टिक सीन्स होने चाहिए कि लोग देखें. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल RRR हो गया, के चैप्टर 2 KGF हो गया, जहाँ पे हम रेलिवेंट कर सके. इमोशनल सीन ऐसे हो कि देखते देखते आंसू खुद ऑटोमेटिकली निकलते चले जाए. इट कुड बी लाइक दैट. वो फिर भी काफी लार्जर देन लाइफ था, इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट से, बिकॉज वो मेरे को उतना रिलेट नहीं करता जितना मेरे को शायद पंचायत या गुल्लक रिलेट करता है. तो वैभव राजगुप्ता एंड अमृत राजगुप्ता का भी नाम लेना चाहूंगा, जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने टाइमलाइनर्स और TVF के साथ चालू करके इतनी बेहतरीन वेब सीरीज बनाई. उसमें भी कहीं ना कहीं जब यू नो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली कुछ अचीव नहीं कर पाती लेकिन फिर भी खुश रह के जी लेती है, जो कि हमारी सच्चाई है, वो देख के भी मुझे रोना आता है. तो मतलब हाँ, वो तन्ना नारे 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 KGF वाला भी रुला देता है, हाँ. और उतना ही मुझे गुल्लक या पंचायत का कुछ रुला देता है. Right, just like Shahid Kapoor's Jersey. हाँ, That was also good because Shahid Kapoor in the story he was struggling to get a 500 rupees jersey for his son. So he was unable to manage 500 rupees. So वो जो टाइप का जो इमोशनल स्क्रिप्ट जो होता है वो रेलिवेंट करता है movies को. So apart from this journey, I do have some kind of questions for you on social media awareness, because even I'm curious and I'm sure that even your viewers will be curious to know like how much time Siddharth spends his time on social media platforms. So basically this question has been asked from Aditya Jain Jain College. He asks like I want to know like how much time you spend on social media. So I'm not asking, Janta is want to ask you their personal questions. यार हाय आदित्य फ्रॉम जय हिंद. Yeah. I love जय हिंद यार. कल रात को मैं देख रहा था कितने लोग नेचुरल्स के पास हैंग करते हैं, बहुत ज्यादा जनता होती है उधर. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सो दिस इज माय स्क्रीन टाइम and I have legit opened the app because this phone allows me to essentially 4 hours, 3 hours 42 minutes to 4 hours is what my screen time is, जिसमें काफी considerable time मेरा Gmail को भी जाता है. बट मैंने एक प्रैक्टिस की जो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. मैंने वीकेंड के बिगिनिंग पे इंटरनेट ऑफ कर दिया था. मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, मेरे घर वालों को पता था, मेरी वाइफ को पता था, और कुछ पार्सल नहीं आने थे तो OTP वगैरह का झंझट नहीं था. बट एसेंशियली फर्स्ट वीक आई ट्राइड फॉर 1 day टर्निंग इंटरनेट ऑफ, सेकंड वीक 2 days, थर्ड वीक मेरी बैटरी खत्म हो गई सैटरडे को, मैंने मंडे तक ऑन नहीं की थी. और ऐसे करके डिस्कनेक्ट या डाउन टाइम लाना बहुत जरूरी है. तो कहीं ना कहीं दैट इज माय फॉलो थ्रू. और क्या है, इट इज अ रैबिट होल, यू नो. द एल्गोरिथम इज बिल्ट इन अ मैनर कि वो आपको ऐसी इमेजरी दिखाए जो आपको पर्टर्ब करे या आपको थोड़ा सा यू नो क्यूरियस करे या कुछ भी कर सकती है. And which is your favorite application on social media? यार आई लव YouTube एनालिटिक्स जस्ट एज मच एज Instagram. तो मतलब एज अ बिजनेस पर्सन आई एम ऑन सोशल मीडिया प्योरली बिकॉज आई एम प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ माय वर्क ऑन सोशल. बट Instagram फॉर श्योर, ठीक है. उसके अलावा YouTube है ही, क्योंकि ऑफ कोर्स अपना सारा काम YouTube पे है. बट YouTube से ज्यादा मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा होता हूँ कई बार. True. So Nigar asks like it is not wrong to say that we are addicted to social media these days. What do you think about this? Hi Nigar, यार we are, I mean that's how they were designed ना. वो नोटिफिकेशन का ऊपर लाल जब आता है तब आपका दिमाग बोलता है कि उस नोटिफिकेशन को क्लियर कर.
मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने इसको एड्रेस किया और फिर मैंने जान के नोटिफिकेशंस के कई जगहों पर बंद किए कि भाई मुझे स्क्रीन पे मत दिखाओ, मुझे लॉक स्क्रीन पे मत दिखाओ, मुझे वो लाल सिंबल तो दिख के ऐसा लगता है कि जैसे जाके मुझे अभी क्लियर करना बहुत जरूरी है। Right. तो वी आर एडिक्टेड यार। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू समहाउ लर्न हाउ टू गेट अवे, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अदर एक्टिविटीज। दीज प्लांट्स आर वेरी गुड क्योंकि मैं I prune, I do some digging, I look at earthworms and feel very happy. तो कुछ एक अलग टास्क करो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सको ताकि आप स्क्रीन से दूर हटो। Right. And we take last question that people, especially women, get stalked on social media. So what do you want to tell on this particular notification? कि आजकल लोग ज़्यादातर stalk भी करते हैं. So Yeah, I think this problem has persisted since time because stalking was a natural this thing that happened and it is problematic. I mean, our movies also promoted it and that's also wrong. So I think it's very important to kind of gain the confidence, and if you like somebody, then you probably tell them what you feel about it. And if they say no, or if they ask you to, go away, then you probably adhere to their advice. And do not disturb them. Stalking is extremely problematic. Sending unsolicited images or advice or lines to anybody is extremely problematic. क्यों ही कर रहे हो ना आप? मतलब अगर आप सोचो आपकी मदर या सिस्टर या किसी को भी आ जाए, एंड दिस माँ बहन का पॉइंट इज नॉट जस्ट द ओनली पॉइंट, जस्ट एज अ सोसाइटी थिंक अबाउट इट कि आपको क्यों करना है ये करने से आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हो और कॉलेज में है या आपने बाहर पे देखा तो you can just go and say hi. So you used to get kind of this kind of DMs when you are with female celebrities. So you used to get some kind of DMs or comments in section down below. Yeah, as a host, I've never spoken in detail about it, but as a director, I was traveling with 3 very popular Instagrammers or creators, and I saw a dick pic that came through on their DM, and at that time Instagram did not have the blurring kind of feature. It did not blur the image, and it was extremely problematic. यार बहुत disturb करता है। आपने क्यों आपका मतलब आपका private part expose करके किसी को भेज दिया है? उनकी सुबह है यार, उनकी दिनचर्या चल रही है, उनका काम चल रहा है, पैसा I think I would call them kind of mentally sick, because this with the proper term could be used for them would be a mentally sick, as I would say. यार आई रियली एज मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी रिसेंटली एक महिला ने एक फोटो भेज दी ऐसे करके, और मेरे को बिल्कुल नहीं समझा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो because sometimes I think so what you wanna tell those youngsters who are watching to you right now? यार वेरी सिंपली पुट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो दिस इज नॉट एक्सपर्ट एडवाइस, बट ये जानिए कि किसी का डीएम उनकी सेफ स्पेस है, उनकी पर्सनल स्पेस है। जो मैं एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था वो ऐसा होता है कि आपको कोई टीचर पसंद थी तो क्यों इसलिए पसंद थी क्योंकि वो शी होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ पावर और आपको पसंद हो सकती थी वो, या पसंद हो सकता था वो। सिमिलरली आप शायद इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स के साथ ऐसा करते हो क्योंकि आपको लगता है कि दिस पर्सन एंड देयर कैरेक्टर हैज लेफ्ट अ मेमोरी ऑफ एफेबिलिटी इन योर हेड। वो शायद ऐसे ना हो, बट नो मैटर व्हाट सेड एंड डन, आप किसी भी पर्सन को क्यों ही ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स भेजोगे? ऐसा करने से अगर आपको सोचो ऐसा कुछ आता तो वो आपको भी डिस्टर्ब करता क्योंकि आपकी दिनचर्या चल रही है, या आपके किसी घर वाले को ऐसा आता तो आपको कैसा लगता? तो ये तो मत ही करो। और ये कई सारा ना ये सारा ज्ञान, जावेद जाफरी साहब से ये बात हो रही थी, वी काइंड ऑफ अमेरिकनाइज्ड, तो वहां पर ये सब होता था, हम सडनली वो सीरियल्स देख के हमारी यहाँ पर कल्चर और दुनिया में ये सब करने लग गए हैं। आई डोंट थिंक these are the appropriate set of takings that we need to borrow from the West. Right. So Siddharth, it was amazing to have a conversation with you. Actually, we have a lot more to speak, but we know that we have that particular time slot. So yeah, I have 5 more minutes. अगर आपको कुछ और बचा है तो पूछ लो। चलो। We have many things to speak. So I just want to know that someone asked to you, मैं उसका क्वेश्चन उठा के आपको पूछता हूँ, like how about Mumbai Journey's OTT platform or mashableindia OTT platform, kind of where you can upload your own video on that application and people can download it from Google Play Store. How about that? Yeah, we are more than open to doing something with an OTT platform. Anybody who has a proposition can come to us and we'll be happy to take it. However, Voot has a special app for like a mini TV of sorts like Amazon does, जहां पर हमारा कंटेंट का स्मॉल चंकी बिट्स लाइक रील्स आप देख सकते हो।
So it's not like we're not present. Snapchat has a whole channel called the Bombay Journey. Please follow us over there. Moj पे हमारी बड़ी presence है, करीब 500,000 subscribers over there. तो we are available on many platforms, but as short form content. तो अगर long form content देखना है और इनकी बात को सच करना है तो please anybody who's probably watching this हमें proposition भेजें, we'll be more than happy. Sure. So it was lovely talking to you, Siddharth, and hope your Mumbai Journey shows rock. Thank you, Haider, and thank you for having me on Haidershowbiz. Looking forward to what we get out of this content. And for me, I love the energy, यार. आपने बहुत deep research की थी. Very rarely do I say this. Comment से लेके content तक and social media से सब कुछ बहुत ही interesting लगा. Thank you so much. Keep watching Haidershowbiz and subscribe to Mashable India.